Hello everyone, my name is Sagar and I welcome all of you for this lecture series. So today we will discuss about the design of a single rod deep groove ball bearing for cyclic load. Okay. In previous lectures, we have discussed about the uh, calculation or you can say design part of single rod deep groove ball bearing and angular contact ball bearing. uh, but having axial and radial load only. Okay, so in this we need to understand how the cyclic load can be uh, affect or how that parameter can be affect while selecting the bearing. Okay, uh, we have considered that whatever the bearing pair we are selecting in this design is common for all shafts. Okay, so just look at the problem first. We will discuss one by one. A single row deep groove ball bearing number 6403 is used to support a lay shaft of 4-speed automobile gearbox. It is subjected to following loads. Gear number 1, axial load 3250, radial load 4000, and the time of engagement when we consider 1 minute time, the total time of engagement is 1%, or they have calculated for 100%. So out of that, first gear is engaged only 1%, okay, of total time. About the gear number two having a radial load of 2750 and axial load is 500. The engaging time of this gear is 3% of total time. Then gear number 3, axial load is 50 Newton, radial load is 2700 Newton. The time of engagement is 21% of total time. And for fourth gear, axial load and radial load is 0 and the time of engagement is 75%. So here the load is neutral, and at this condition the maximum vehicle is get engaged. Okay, the lay shaft is connected to the engine shaft and the rotate with the rpm is 1750 rpm. If the bearing is expected to be used for 4000 hours, determine the reliability of the bearing. Okay, so first of all, we need to understand that the time engagement is given with respect to the total time. They have take a part, or you can say they have converted the different cycles. Okay, so engagement of first gear is a first cycle, then engagement of second gear is second cycle and second part for third and fourth. Okay, so similarly they have find out the different cyclic conditions. From the given data, what we understood, for first gear, the axial load is and radial load is very high, and it get axial load is reduces as the number or type as the gear engagement get increased. For fourth gear, it is completely zero. About the radial load, it is also gradually decreases, or you can say for second and third it is near about constant, but time engagement is great variable. Okay, so based on these conditions, how we can find out the life of bearing? Okay, they have uh, mentioned that we need to calculate the reliability of the bearing. इसका मतलब क्या है कि हमें जो साइक्लिक लोड कंडीशन दिया है, तो उसमें जो बेरिंग सेलेक्ट किया है इट इज 6403, जो 1750 आरपीएम में रोटेट होने वाला है, और इसका जो लाइफ दिया है एक्सपेक्टेड लाइफ वो 4000 हार्स दिया है. तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है या फिर रिलायबिलिटी ऑफ दैट बेरिंग फाइंड आउट करना है. मतलब वो कितने परसेंट टिक सकता है, 90%. If it is okay with the 90%, then the bearing is
Okay, if the reliability get increases, then it is very good with respect to the system point of view. So, okay, let's start with the given data. So bearing is given bearing is 6403 deep groove ball bearing, extra heavy load carrying capacity, and the diameter 03, that is given. You can refer PhD page number 4.15 and calculate, or you can note down the static and dynamic capacity of this bearing. Is static capacity is 1280 kgf and dynamic capacity is 1800 kgf. Expected life in hours is 4000 hours. Speed 1750 rpm, which is not varying with the condition. Then service factor, uh, from PSG we have selected the service factor is 1.4, rotating machine with a minor uh, service minor shocks we have considered. So in this condition, based on the range, we find out the value of, or we have selected the value of S is equal to 1.4. So first step, we need to calculate the thrust factor. Okay, so in this cyclic load, we need to calculate thrust factor for each stage, or you can say for each gear. Okay, so for first gear, referring page number 4.4, first of all we have calculated the two ratios, that is FA1 divided by C0, which is 0.25, and FA upon FR ratio, which is 0.81. Okay, as compared that I will just show you. First of all, if you don't have an idea how we can select the axial and radial factor, we will discuss. Okay, so FA upon FR ratio, which we have calculated, is 0.8, and FA upon CO ratio is 0.25. So here the 0.25 value is given. 0.25 value is given. So the value of E is 0.31. The value of E is 0.31. Now we find that the value of FA upon FR ratio is greater than that of E. Okay, so मतलब यहाँ पे अपना जो FA upon FR ratio जो है वो E से ज़्यादा आ गया because that is 0.81. ठीक है, तो अभी X की वैल्यू और Y की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे? So for X we are referring this column. For value of X, refer this column. X का वैल्यू तो मिल गया 0.56. Okay, now how to find out the value of Y? By considering same row, in which row we have find out the value of E. तो वही रो हम लोग फॉलो करेंगे जहां पे FA अपॉन CO का रेशियो था 0.25 and E का वैल्यू था 0.37. So what we get, the value of Y is 1.2. Okay, we have note down this value. Okay, and similarly you have to find out the values of axial, radial and thrust factor for all gear. Okay, so in this way we have find out for first one. For second gear, FA upon CO for second gear, just share the screen of calculation. For second gear, the FA upon CO ratio is 0.039 and the FA upon FR ratio is 0.181. Okay, we will refer the equation, we will refer the page. The value of FA1CO is 0.39. I can ultimately we need to find out the value which is nearer one. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको राउंड अप करके हम लोग 0.4 को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो 0.4 अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ई का वैल्यू आता है 0.24. ई का वैल्यू कितना आता है 0.24. and about the FA upon FR ratio,
the value is 0.18, the value is 0.18. तो अभी ये कंडीशन में क्या आता है कि E का वैल्यू ज्यादा है as compared to the FA upon FR ratio. So we need to refer this column, and this column indicates the value of x and y. It can provide the direct value of x and y. X is equal to 1 and y is equal to 0. Okay, so the radial factor is 1 and axial factor is 0. Okay, hope you understood properly. For third condition or for third gear, CO FA upon CO is 0 near about 3.9 into 10 raised to minus 3, and FA upon FR ratio is 0.018. Similarly, the value of E is greater than that of FA upon FR ratio. So again the radial factor is 1 and axial factor is 0 for gear number 3. For gear number 4, as we know that all the values of FA upon FA and FR, that is axial load and radial load, are 0. That's why we are not considering this one for calculation purpose to calculate the equivalent load. Okay, as we get all the values of X, radial factor and axial factor for each gear, now next step is to calculate the equivalent load. Here also we need to calculate equivalent load for each gear. So first gear, gear number 1, P1 is equal to X1 Y1 FR1 plus Y1 FA1 into S, service factor which is common for all. Okay, so value of X is 0.56, or putting all the values, what we get, the value of P is 8596 Newton. Now to calculate the equivalent life or the life of this bearing in million revolutions, we need to find out the life based on the engagement of the gear with respect to the total engagement time. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं n is equal to percent of time engaged with the given gear into LH10 into 60 into n divided by 10 raised to 6. Okay, standard equation क्या है, life in million revolution, expected life is equal to LH10, that is a life in hour, into 60 into n divided by 10 raised to 6. Now that engagement time also plays an important role. तो वो एंगेजमेंट टाइम हमको क्या देगा कि कौन से लोड एक्चुअली बेरिंग्स पे आ रहे हैं. ओके, और वो बेरिंग कितने देर के लिए वो लोड्स कंसिडर कर रहा है. whenever we are calculating all these equivalent values, so whichever is the maximum, based on that we will discuss, or if you don't have any bearing number, based on that value you can find out the actual bearing. Okay, और हम लोग आगे जाके उसका इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, इक्विवेलेंट मतलब क्यूबिक का, मतलब उसका जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड आउट करने वाले हैं बेस्ड ऑन द ऑल वैल्यूज. ठीक है, so first of all, by putting all the equation, we don't have an idea about the life which is provided for 90%. ठीक है, हमें दिया गया है कि कम से कम उसका जो लाइफ है वो कितना आना चाहिए. तो एक्सपेक्टेड लाइफ है 4000 आवर्स. तो हमें वो पता नहीं है कि कितना लाइफ इस बेरिंग से हमें मिलेगा. ओके, कितना देर ये चलेगा. तो हमें पहले वो कैलकुलेट करना है और वो चेक करना है कि वो 4000 से कम नहीं आना चाहिए. ठीक है, देन for first we are putting all the values. What we get, n1 is equal to 1.05 into LH10 into 10 raised to 6, into 10 raised to minus 3. Similarly, we calculated the equivalent load as well as the equivalent life of bearing in million revolution for each gear.
Okay, for each gear. Here the for P and P2 and P3, P2 is given. For P3, you can refer this one. You can refer this one. Okay, so P3 का भी equivalent load as well as life in a million revolutions also we have calculated. In case of P4, fourth gear में वैसे ही उसका x and y का वैल्यू जो है that is radial load and axial load वो zero है. So that's why the value of P4 is zero. But the engagement time point of view, the maximum engagement is done in this gear only. तो अपना जो टोटल टाइम है अगर हम लोग 100% कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें से 75% फोर्थ गियर हमेशा एंगेज रह रहा है गियर बॉक्स में. तो we need to calculate the life of that bearing also. Okay, तो हमने वो भी calculations किया है. तो the value with respect to L10 NH4 is equal to 78.75 into 10 raised to minus 3 LST. Now we need to calculate equivalent dynamic load. हमने जो अभी ऊपर से जो P का वैल्यू फाइंड आउट किया है इक्विवेलेंट लोड, तो हमें उसका भी एवरेज और मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो वो कहाँ पे है? रेफरिंग पेज नंबर 4.2 विल शो यू. Referring page number 4.2, you can find out here the cubic mean load. Okay, if the time is given, you can go with the time. If revolutions is given, you can use there are two equations for revolution, this one, and if the time is given, you can refer this equation. We have calculated revolutions. Okay, सो हर साइकिल के हिसाब से उसका रिवॉल्यूशन चेंज होता है, तो हम लोगों को ये इक्वेशन की यूज करना है. और हर साइकिल के हिसाब से अगर टाइम वेरिएशन हो रहा है तो हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना है. वी हैव बोथ वैल्यूज, यू कैन रेफर टाइम और रिवॉल्यूशन. ओके, आई विल प्रेफर द रिवॉल्यूशन. ओके, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस इक्वेशन. गो टू द डिजाइन. तो हमने ये इक्वेशन चूज किया है. पीएचजी से हम थोड़ा नोटेशन चेंज कर रहे हैं. सो पी इज इक्वल टू P1 क्यूब इंटू N1 प्लस P2 क्यूब इंटू N2 प्लस P3 क्यूब इंटू N3 प्लस P4 क्यूब इंटू N4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4. और इस सब का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है. ओके, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज LS10 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा. सो वी डायरेक्टली गेट द इक्विवेलेंट डायनामिक लोड. ओके, सो वैल्यू ऑफ Q you can find out, or average equivalent load you can find out. P is equal to 2879.21 न्यूटन. ओके, तो इसका हमने क्या किया, जो एक्सियल रेडियल लोड थे तो इसका हमने एक सिंगल इमेजिनरी लोड बना दिया, रेडियल लोड, विच इज एक्टिंग ओवर द बेरिंग. ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट कर दिया. Now next one, we need to calculate a dynamic based on the dynamic capacity which is calculated. We have to find out, based on the equivalent load and the dynamic capacity of bearing, we need to find out the rating life. We need to find out rating life for 90% probability of survival. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? रेफरिंग पेज नंबर 4.2, C is equal to L by L10 raised to 1 upon K into P. Okay, we'll seen in the PSG. So we are using this dynamic capacity equation. C is equal to L by L10 into P, L by L10 raised to 1 upon K. Now K का value किस पे dependent है? Which type of bearing we are using? If ball bearing is used, value of K is 3. If the roller bearing is used, the value of K is 10 by 3. Okay, तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? We are using a ball bearing. Okay, तो value of K is equal to 3. And as I mentioned, L10 is the life,
इन अ मिलियन रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये जो है लाइफ वो 1 मिलियन रिवॉल्यूशन है और हमें फाइंड आउट करना है एल के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गो टू द डिजाइन, तो whatever the values we have calculated, we are putting that values. Okay, but how to find out the value of L if we don't have an equation? Then if we adding, or you can make a sum of all the RPM, or you can say all सभी साइकिल का अगर हम लोग उसका बेरिंग का लाइफ का अगर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल लाइफ मिल जाएगा। ओके, तो L इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ओके, सो व्हाट वी गेट, पहले हमें इक्वेशन से क्या मिला, पहले इक्वेशन से L बाई L10 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 503.135 मिलियन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, और हमारी दूसरी इक्वेशन से, मतलब कौन सा इक्वेशन, L इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, दैट इज अ लाइफ ऑफ बेरिंग। ओके, इन मिलियन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो है इससे हमें अभी सेकेंड लाइफ मिला है। ठीक है, वी आर इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशंस। ओके, सो L10 का वैल्यू यहाँ पे भी इन द फॉर्म ऑफ LH10 है और ऊपर भी हमें टोटल वैल्यू पता है। सो ओनली वन थिंग इज अननोन, दैट इज LH10। ठीक है, तो इससे क्या पता, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 what we get, the value of LH10 is equal to 4791.76 hours। तो 90, अगर बेरिंग का 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है तो कम से कम कितना चलेगा, 4791.76 hours। ठीक है, now they have asked in a question that to find out the probability of survival of the bearing। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 4000 हमें प्रोबेबिलिटी दी है कि कम से कम इतना चलना चाहिए। अगर 4000 चलना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 90% प्रोबेबिलिटी से उसका लाइफ कितना आता है, 4791, मतलब 4791। तो इतना लाइफ 90% के लिए है, तो ऑब्वियसली लाइफ अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी और यू कैन से रिलायबिलिटी ऑफ द बेरिंग गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, सो अगर आपको क्रॉस चेक करना है एनीवेयर, इफ यू थिंक दैट द वैल्यू इज, मैं प्रॉब्लम बराबर सॉल्व कर रहा हूँ या फिर गलत जा रहा हूँ, सो दिस इज अ चेक पॉइंट फॉर यू दैट इफ 90 जो भी अपना बेरिंग का प्रोबेबिलिटी दिया है आपको, सर्वाइवल का लाइफ रेटिंग दिया है, वो अगर 90% से कंपैरिजन करेंगे तो जो भी 90% से ऊपर वाले रिलायबिलिटी है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है उनका लाइफ हमेशा कम रहता है। सो दैट दिस वन इज अ चेक पॉइंट फॉर यू। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्वाइवल वैल्यू, कितना प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करना है। You can say reliability or probability. So using probability of survival equation, L by L10 is equal to natural log of 1 upon P divided by natural log of 1 upon P10 raised to 1 by B। तो यहाँ पे हम लोग डीप ग्रुप बॉल बेरिंग यूज कर रहे हैं, तो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग के लिए द वैल्यू ऑफ P इज 1.34। ठीक है, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, P का वैल्यू है 9, P का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो उस वैल्यू से हमें परसेंटेज पता चलेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी ये बेरिंग का है। ओके, सो P10 इज 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो 10 का इंडिकेशन क्या है कि नंबर ऑफ परसेंट ऑफ फेल्यूर। अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहते हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, P10 लिखा है आपने तो इसका मतलब क्या है कि 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, 10 का मतलब क्या है, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आप लोग जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो। ठीक है,
Now putting all the values, L ka value 4000, L10 ka value 4791, which is calculated, 4000 which is given already. Okay, so after calculating what we get, the probability of survival of the bearing is 92.06%. Okay, तो ये जो बेरिंग है ये 90% प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है। तो इसका रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर इसको हम लोग 92 पॉइंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि फेलियर होने के चांसेस ओनली 8% अवेलेबल है, या फिर 7.092 सॉरी 7.92% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, उसका इतना फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो इट्स मीन दैट यू हैव इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द बेरिंग, तो ये ज्यादा चल सकता है, ऐसे हमने कंसिडर किया है। ओके, सो based on the requirement we have calculate the reliability or you can say probability of survival of the bearing, ठीक है। आप उसे प्रोबेबिलिटी कहो या फिर रिलायबिलिटी कहो, सिस्टम का दोनों भी एक ही वैल्यू आने वाला है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिजाइन प्रोसीजर। if you have any query you can contact me. I have mentioned my email address as well as mobile number in description box, as well as I have mentioned the previous lecture link or previous problem links in the description box. You can refer that also, and if you have query you can contact me. I request all of you to subscribe to my channel, so whenever I upload new videos you can get that videos without failing. Okay, so thank you very much for joining me.